Hi guys, a very good morning to all of you. I'm Saba, your English faculty at Oliveboard. I hope I'm audible and visible to you all. Quickly let me know. जल्दी से confirm करिए. Is everything fine? Are we live now? Good morning guys. Good morning. A very good morning everyone. Today both the articles are going to be extremely good. Even we have so many vocabs. Vocabs भी काफी ज्यादा है. Articles are also good. Okay. So I want time to discuss both the articles. ठीक है, दोनों ही articles के लिए time चाहिए. So without much ado, we will quickly start this session so that we can cover both the articles timely. ठीक है. So काफी अच्छी आर्टिकल से आर्टिकल अच्छी है. Besides they are going to be a good learning for you. Okay. So vocabs are also very nice. So guys, quickly join this session. Devdeep, I'm perfectly fine. What about you? You joined after many days. So guys, quickly join this session, share this session with others and like this session. Okay. So if I talk about Thursday's homework, it was done by Divya, updated JS and current affairs, Sabri, Sandhya, Tina, Rekha, Shafi, Dhirendra, Geeta, then Apurva, Praveen, Zero, Arju, Renu. All these people did the homework. Okay, ये सारे लोगों ने homework किया था. And Sanjeev as well. Okay. Now today's quote is, if there is no struggle, there is no progress. So yes, अगर आपके लाइफ में struggle नहीं होगा, then definitely you will be at a bottleneck situation. ठीक है. So आप stagnant हो जाएंगे. You will be at a bottleneck situation कि आपकी लाइफ में कोई further progress नहीं होगा. So these struggles, they tell us about our limitations, about our like scope for improvement. So definitely struggles are there to shape you. They are there to form you, not to mar you. Remember that thing. Okay. So do that thing. सपना डिडंट रिसीव. आई डोंट नो कब था, कब आपने किया था, डोंट नो. माइट भी कल क्या होगा तो नहीं पता मुझे, बिकॉज मैंने परसों थर्सडे होमवर्क था ना, तो आई चेक इट ऑन फ्राइडे ओनली. कल ही चेक किया था मैंने दिन में. सो गाइस, क्विकली सब्सक्राइब टू अवर वाईटी चैनल. एक बार फटाफट से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर डेफिनेटली कर दीजिए. ओके. सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस सेशन विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू अवर वाईटी चैनल. Now, glimpse of the session. As usual, we are going to start with the revision session. We have one slide for revision. Vocabs, we are going to see. I didn't stop the class. It is just a 9 a.m. session we have at a different platform. So the classes are not stopped. Devdeep. So we have vocabs. We have very good terms in today's session. So many good vocabs we are going to learn. Okay? Idioms and phrases. We do have phrasal verbs. 13 phrasal verbs we have. काफी सारे phrasal verbs हैं. ठीक है? A complete analysis of both the articles we are going to do today. ठीक है, दोनों ही आर्टिकल की एनालिसिस होगी. ग्रामर लर्निंग वी हैव, टोन ऑब्जेक्टिव वी हैव, प्रैक्टिस एक्सरसाइज. तो ये जो 3 सेगमेंट हो गया इन दिस आर्टिकल, दीज आर वेरी वेरी गुड टुडे. ठीक है. सो आई होप बाय टिल नाउ everyone is ready for the revision session. अभी तक सब लोग रेडी हो गए होंगे रिविजन सेशन के लिए. ओके. सो आई वांट क्विक रिप्लाई. आई एम गुड. चले गाइस, क्विकली मैच दीज वर्ड्स. क्विक रिप्लाई, करेक्ट रिप्लाई. Quickly guys, please give the answer. I guess you all are correct. Arju, Sonali, Innocent, Jia, Madhurima, Pankuri, I guess everyone is right. Okay. So catalog, as you know, it is a verb here. It is not a noun. So catalog as a verb means to classify something. किसी भी चीज को classify करना, categorize करना. Okay. So that is called catalog as a verb. Okay. So to classify or categorize something. So it will be matched with third. Curtail means reduce or lessen something. किसी भी चीज को कम कर देना. That is curtail. B will be matched with fourth. Desist basically we say abstain or refrain from something. किसी भी चीज से refrain करना, परहेज करना. So परहेज करना जिसको हिंदी में कहते हैं, that is called desist. It means abstain or refrain from something. So it will be matched with 7. Vilification, vituperation, criticism, very harsh criticism, that is called vilification. So D will be matched with first. Deliberate, basically we say contemplate. It is already matched. Ponder, think over something, किसी भी चीज के ऊपर सोच विचार करना. Okay. So E will be matched with fifth. हाँ, रिड्यूस, अबेट, ये सारे वर्ड्स आप बोल सकते हैं. अबेट ऑल्सो बी कॉल्ड टू लिसन. करेक्ट प्रभाव. बर्निश, बर्निश बेसिकली वी से पॉलिश. किसी भी चीज को पॉलिश करना, इट इज ऑल्सो ऑलरेडी मैच. मतलब पॉलिश करके उसके साइन को एनहांस करना. सो एनहांस द शाइन, एनहांस द ब्राइटनेस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड बर्निश. ओके.
So F will be matched with sixth. And the last word we have is dissent. Dissent basically we say disagreement. Dissent basically we say disagreement. Okay. So G will be matched with 2. So 3, 4, 7, 1, 5, 6, 2 is the correct answer, right? And I guess those who ever replied, they are correct. Okay. Next. Yes, Pankuri correct. Chaliye. Now, Revision sir, we saw three idioms in the previous session. In line with, that is very common. In line with, basically we say in alignment or in accordance with. किसी भी चीज के according होना, that is called in line with. Hold sway. Sway, as you know, that is power, influence, cloud. So hold sway means to have a great power, great influence on something. And crack down on means to take severe measures against someone or something. किसी के भी against में strict measures लेना, strict actions लेना, that is called uh, crack down on. Okay? चलिए, let's start today's session. ठीक है? When you guys are getting your joining, Arju, Innocent, I think both of you have got CBI only, no? So when are you getting your joining? It has been quite a time. Now you should be in bank. चलिए, let's see the word vocabs of today's session. Now the first word of today's session is quagmire. देखिए, quagmire, if you talk about the exact meaning, ठीक है? Quagmire basically we say that you know जिसको क्या कहते हैं, वेरी सॉगी एरिया, जिसको हिंदी में दलदल कहते हैं, कीचड़ कहते हैं. सो दैट वेट सॉगी एरिया, दैट इज कॉल्ड क्वैगमायर. ठीक है. नाउ इफ यू गेट इनटू अ क्वैगमायर, क्वैगमायर क्या होता है, जिसको कहते हैं दलदल में फंस जाना. इट मीन्स आप उसमें चले, अगर एक बार आप चले गए तो बाहर आने के स्कोप बहुत कम हो जाता है, बिकॉज आप उसके अंदर फंस जाते हैं. ओके. सो दैट इज व्हाट क्वैगमायर. ओके. एंड ऑकवर्ड, कॉम्प्लेक्स और हजार्डस सिचुएशन, कि जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो वेरी ऑकवर्ड, वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, हजार्डस सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड क्वैगमार. क्लियर एवरीवन? सो इट इज अ नाउन बेसिकली. ये आप याद रखिएगा कि ये बेसिकली सॉगी एरिया को भी कहा जाता है. ओके. Now, next word we have is bestow. So bestow is a verb that means to confer or grant something. किसी को भी जैसे bestow some responsibilities, confer, grant, bestow some shower. Okay, तो किसी के ऊपर भी bestow love. Okay, बहुत सारे words होते हैं. तो shower, confer, grant, all these are the synonyms of the word bestow. It is a verb. Okay. Next word we have is a fray. So fray we have been seeing since, मतलब we have seen this word so many times. So fray we call to a battle or fight. इसको दंगा भी कहते हैं. And fray we also call to an intense competition. जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, an intense competition, that is also called fray. उसे भी fray कहा जाता है, right? हाँ, conflict, battle, fight, intense competition, all these are the synonyms. Okay? किसका मतलब आप बोल रहे तारीफ करना भी होता है, सोनाली? It is also a noun. So many words, you know, so many words for fight. बहुत सारे words हैं. Next, carnage you cannot say. Carnage for what you are saying? Carnage basically we call to massacre. So carnage you cannot say, but yes, any battle, any fight, that can be called fray. Okay. Now next word we have is spurred. Spurred basically can be a noun also. It can be a verb also. So spurred means an increase or to increase or grow very quickly. कोई भी चीज जब बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो we say sudden spurt. So it can be a noun, it can be a verb, to increase or grow rapidly, quickly. Proliferate also you can say, right? Proliferate, burgeon, all these can be the synonyms. Outburst, yes, outburst of something, किसी भी चीज का मतलब बहुत तेजी से, burgeon. So all these can be the synonyms of the word spurt. ये सारे के सारे synonyms होते हैं. Okay. Snowballing, so many words we have. ठीक है. Mushrooming, spure, not spure we can say. No idea, Sonali. I haven't heard this. Okay, this phrase. If it is there, so I do not have heard. Okay, I have not heard. Now, vandalism basically we say deliberate destruction of public. यहाँ पे deliberate का मतलब क्या है? Intentional, जानबूझ के करना. Okay, so vandalism basically we say
डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब ये जो जानबूझ के जो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा जाता है, वेन एवर वी हैव अ राइट, वेन एवर वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, सो देर आर मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन टू दिस वैंडलिज्म. सो वैंडलिज्म बेसिकली वी कॉल टू डिस्ट्रक्शन, डैमेज दैट इज कॉज टू पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड वैंडलिज्म. इट इज नॉट. Okay, and vandalism and arson, these two words are often asked in SSC. So there is a difference between vandalism and arson. Okay, arson basically we say deliberate action of putting the property to fire, जिसको हिंदी में आगजनी कहते हैं. तो when you put a property on fire, that is called arson. Okay, and when you destroy that, जब आप उसको तोड़ फोड़ करते हैं, तो that is called vandalism. So vandalism and arson, they both are not synonyms, they both have different meanings. So putting the property, setting something on fire, that is called arson, and destroying something, तोड़ फोड़ करना, तहस नहस करना, that is called vandalism. Clear everyone? So this is noun, this is also noun, both are good terms जो आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं. Okay, so both are good terms. Now next word, vandal gun है. Okay, next word we have is concede. This also we have heard so many times. Concede basically we say agree or admit after denying. मतलब ना ना करके हाँ करना. मैं सिंपल सही बोलती हूँ, ना ना करने के बाद हाँ करना, किसी भी चीज पे अग्री कर देना, एडमिट कर लेना, और टू एक्नॉलेज समथिंग, किसी भी चीज को मान लेना, एक्नॉलेज कर लेना. सो दैट इज कॉल्ड कंसीड. ओके, वी इवन हैव द वर्ड कंसीड कैन ऑल्सो मीन ग्रांट समथिंग. ओके, सो जो बिस्टाउ का सेंस आता है, दैट सेंस ऑल्सो इज कैरिड बाय द वर्ड कंसीड. ओके, सो ग्रांट समथिंग, अग्री टू समथिंग, एडमिट समथिंग आफ्टर डिनाइंग, एक्नॉलेज, सो ऑल दिस कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कंसीड. ये क्या फ्लावर नहीं आसन है में, मतलब व्हाट इज दिस फ्लावर नहीं आसन है में? सिंग, डू यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वर्ड आसन? नेक्स्ट, हाँ, ग्रांट इज ऑल्सो द मीनिंग. ओके, इट इज रिटन, सो आई विल इरेज माइन. Next word we have is stem. Now this is a very good usage. See, stem, एक तो आपको पता होगा stem, that is तना. Okay, so stem basically we have, it has two meanings. Something stems from, stem means originate also, किसी भी चीज से originate होना. Okay, so develop or originate from something, that is also called stem. And stem has just contrasting meaning also, that is to stop the spread or development of something. ठीक है, तो किसी भी चीज के डेवलपमेंट को स्टॉप कर देना, so that is also called stem. Clear everyone? अच्छा, okay, so clear everyone? So stop the spread or development of something, that is called stem. Stem we also say originate from something, flourish from something. Okay, so that is called stem. It is a verb. Next, endorse basically say validate or support. You know, proper, buttress. तो ये word तो काफी बार हमने देखा है. So endorse basically say validate, support, proper, buttress. All these are the synonyms of the word endorse. Endorse is verb. Endorse is verb. Next, pie. देखिए, पाई वर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग्स. पाई बेसिकली वी कॉल टू एप्पल पाई, आप सबको पता होगा. पाई वी कॉल टू केक, पाई वी कॉल टू पिज्जा, पाई वी कॉल टू पेस्ट्रीज. ठीक है, तो पाई बेसिकली इट इज रिलेटेड टू ईटेबल्स, एडिबल थिंग से रिलेटेड होता है. ठीक है, पाई, पाई वर्ड. पाई चार्ट आपने सुना होगा. पाई वी ऑल्सो कॉल टू मनी, एक एक पाई वी से ना, तो दैट पैसा इज ऑल्सो कॉल्ड पाई. बट पाई वी ऑल्सो कॉल फॉर शेयर, शेयर के लिए भी हम लोग यूज करते हैं पाई. यस, हाँ, मैथ्स में सबने पाई पढ़ा होगा. सो देर आर सो मेनी मीनिंग्स, देर आर सो मेनी मीनिंग्स. ओके, सो पाई बेसिकली हियर इट रेफर्स टू शेयर. ठीक है, सो वैलिडेट, सपोर्ट, प्रॉपर, बट्रेस. यस, यहाँ पे बोलते बहुत सारे वर्ड्स हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हिस्टेरिक. तो हिस्ट्रिक बेसिकली वी कॉल टू वाइल्डनेस, इरेशनल, मतलब बिल्कुल वाइल्डनेस, यू नो, यू आर इलॉजिकल, यू कैन से, मतलब बिना सोचे समझे कोई काम कर रहे हैं. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड, उसे कहा जाता है हिस्टेरिक. सो दैट इज वाइल्डनेस, इरेशनल, इलॉजिकल, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स, जिसका कोई मतलब नहीं हो. ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ब्रीविंग. सो ब्रीविंग, एक तो कॉफी आपने सुना होगा, ब्रीविंग कॉफी वी से.
मतलब द वे वी प्रिपेयर अ कॉफी, फॉर दैट ऑल्सो वी यूज द वर्ड ब्रीविंग. ओके, उसके लिए भी हम लोग ब्रीविंग वर्ड का यूज करते हैं. बट ब्रीविंग हियर इट रेफर्स टू एन अनवेलकम सिचुएशन दैट बिगिंस टू डेवलप. जब कोई भी चीज अनवेलकम, जैसे कोई राइट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह प्रोटेस्ट, अगर ये चीजें धीरे धीरे, जिसको हिंदी में कहते हैं पनपना, so when they start boiling, okay, so the simmering, so that is called breathing, an unwelcome situation that begins to develop. Yes, correct, Arju, we can call it looming also. Pie is a piece of cake also. Okay. One who makes coffee, he's called brewer. So brewer basically it is a process of making coffee. But breathing, we also say that unwelcome situation that begins to develop slowly, slowly. Okay. Next, conflagration. Conflagration basically it is also a very good term for fire. So a wildfire, मतलब जो बहुत large scale fire, holocaust basically we call to a large scale fire that destroys everything, जो सारी चीजें तबाह कर देता है. So a large scale fire that destroys everything, that is called conflagration. So you can say a large disastrous fire, holocaust, all these can be the synonyms. Okay. Good morning. Good morning, everyone. Next word. Alacrity. This is also a good term. So alacrity is noun. Alacrity basically we say eagerness or willingness to do something. Okay. So the swiftness at which you respond to something, that is called alacrity. So your eagerness, willingness, that is called alacrity. There is nothing related to forest fire. हाँ, ये आप कह सकते हैं. कॉन्फ्लैग्रेशन भी बेसिकली यूज फॉर फॉरेस्ट फायर, जो काफी सारी चीजें तबाह कर देती है. बट द आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू फॉरेस्ट फायर. ओके. हाँ, बट आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू फॉरेस्ट फायर. रिमेंबर दैट थिंग. ओके. हाँ, zeal, eagerness, willingness, all these are the synonyms of the word alacrity. That is a good word. Next, ostensibly. Ostensibly basically we say outwardly, apparently. मतलब जो चीज हकीकत में ना हो. Superficially you can say something that is not actually, but superficially it seems. Okay, so that is called ostensibly, outwardly, apparently, superficially. All these are the synonyms. Clear? Correct and right. Next word we have is recourse. So recourse basically we call to a source of help in a difficult situation. So whenever we have a very difficult situation, you think of a recourse. That is a help. You seek a possible help to come out of that difficult situation. So that is called recourse. So recourse basically we say a source of help in a difficult situation. Okay. So it is a noun. Ostensibly is an adverb. Okay. Next. Vinny, please do not spam. Next word we have is convene. Convene basically we use for meeting. This is also a very good word. Whenever we have uh, so that is your convene basically we say कि meeting के लिए, जब किसी भी meeting के लिए बुलाते हैं लोगों को, तो we say the word that is convene. So bring together for a meeting, assemble, summon someone for meeting, so that is called convene. Okay, किसी भी meeting के लिए लोगों को इकट्ठा करना. Okay. Next word we have is faltering. So faltering basically we say something that loses strength or momentum. जिसमें कोई strength नहीं होता, कोई momentum नहीं होता. Faltering we also use for hesitating. Okay, stumbling. Faltering we also use for stumbling. So something that is losing its momentum, its strength. So that is called faltering. Okay. Convince का मतलब बुलाना, not मनाना, जयंत. ठीक है? Not मनाना. हाँ, dither you can say, dither, all these words. Okay. Rendezvous is different, Madhurima. Rendezvous basically we call to meeting. Rendezvous is for meeting. Convene is a verb. Convene basically is a verb. It means to call people for meeting. That is called convene. Okay. So tryst and rendezvous, these are different things. Tryst word basically we call to secret meeting of lovers. This is basically secret meeting of lovers. So rendezvous basically we call to meeting point. Okay, remember that difference. Secret meeting of lovers, that is called tryst. And rendezvous basically meeting or meeting point, that is called rendezvous. Okay. Yes. ये वैलेंटाइंस पे आपको बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्टॉल. स्टॉल बेसिकली वी से नाउ फ्रॉम हियर वी हैव द वोकैब्स ऑफ सेकंड आर्टिकल. यहाँ से सेकंड आर्टिकल के वोकैब्स स्टार्ट है. सो स्टॉल बेसिकली वी से ऑब्स्ट्रक्ट और इम्पीड समथिंग, किसी भी चीज को हिंडर करना, प्रिवेंट करना, सो दैट इज कॉल्ड स्टॉल. ओके. सो ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड, दैट इज कॉल्ड. So that is a program. Yes, you can learn vocabs from that also. Okay. Stop, yes, obstruct, impede, hinder, prevent, all these.
Next word we have is squarely. Squarely basically we say straightforward. Squarely basically we say straightforward. This is also a good word. It means in a direct and uncompromising manner. आप बिल्कुल भी compromise नहीं कर रहे हैं, आप directly जो है वो बोल रहे हैं. Okay, so fairly, yes, fair and square, that is an idiom. I hope you know. Fair and square, that is an idiom. So fair and square basically we say straightforward, frank, straightforward, candid. All these can be the synonyms. Call a spade, very good, Sonali. So there is a good idiom. Call a spade, very good. जो है वही बोलना, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बोलना. कॉल अ स्पेड, जो है वही बताना, उसको कुछ भी मॉडिफाई करके नहीं बताना. ठीक है. सो फेयर एंड स्क्वायर, frank, candid, straightforward. So squarely basically we say in a direct and uncompromising manner, straightforward. Okay. On board basically we use for you can say that is honest, fair on board. Okay. Next. Proximate basically we say approximate value of something. So that is approximate. It is an adjective. It is a verb. Okay. Next. Predate. अब देखिए प्रीडेटर, आपको पता होगा प्रीडेटर भी यूज फॉर प्रे, शिकार के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है, प्रीडेटर. बट प्रीडेट वी ऑल्सो नो एग्जिस्टिंग बिफोर डेट. सो एग्जिस्ट और अकर, जैसे कोई डेट है उससे पहले कुछ होना. सो दैट इज कॉल्ड प्री डेट. एग्जिस्ट और अकर ऑफ अ डेट अर्लियर दैट समथिंग, कि किसी से पहले अकर करना, दैट इज कॉल्ड प्री डेट. क्लियर एवरीवन? गॉट इट? सो कोई चीज जो पहले अकर करती, प्री मतलब पहले, डेट मतलब आज की डेट से, तो आज की डेट से जो पहले हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड बाइकॉन. ऑल्सो वी कैन से समथिंग जो हो चुकी है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड प्री डेट. Then malaise basically we say a state of a period of restlessness when you are not feeling happy. ठीक है, आप बेचैन है, that is called malaise. So that is unhappiness, restlessness. All these are the synonyms. Okay. So mal word, you know, always it is for negative. So when you don't feel, कहते हैं ना आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, so that feeling is called malaise, unhappiness, restlessness. Okay. Then ब्रीजिंग बेसिकली यू नो, ब्रीजेस बेसिकली हमारी स्किन पे जो लाइक व्हेन वी गेट बर्न्ड, तो वी हैव ब्रीजेस ऑन अवर स्किन. ओके, सो इट इज कॉल्ड इंजरी. ठीक है, स्किन के लिए बेसिकली यूज होता है, तो इंजरिंग, दैट इज कॉल्ड ब्रीजिंग. सिंपल. सो इट कैन बी अ वर्ब, इट कैन बी एन एडजेक्टिव ऑल्सो. यस सिंह, मलाइस अलग है, मलाइस अलग है. MALICE. मलाइस बेसिकली वी कॉल टू मीन. ओके. हाँ, रैशेस इट इज एक्चुअली नॉट रैशेस. वो जो थोड़ा सा स्वेल हो जाती है ना स्किन जब जलते वगैरह हैं, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड ब्रीजेस. ओके. तो बट यहाँ पर इसका मतलब है इंजरी. ठीक है. क्लियर एवरीवन? सो मलाइस बेसिकली वी कॉल टू रॉन्ग इंटेंशन, बैड इंटेंशन. ओके. यस. देन नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हॉबल्ड. देखिए आप काफी सारे वोकैब्स है, सो आई वांट फुल अटेंशन हियर, नॉट ऑन क्रिकेट मैच एंड ट्राइस्ट एंड रॉन्डेवू. ओके, तो पहले इधर फोकस कर लीजिए. सो हॉबल बेसिकली वी से रेस्ट्रिक्ट द, हॉबल बेसिकली वी से रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग. फिर आप यहाँ पे वर्ड कह सकते हैं स्टॉल, किसी भी चीज के प्रोग्रेस को रोक देना. राइट. सो यू कैन यूज द वर्ड स्टॉल, impede, all these words you can use. Okay, so restrict the activity or development of something, that is called hobble. Yes, hobby. Yes, you can say stem also. Stall, stem, all these words can be used. Correct thing. ठीक है. तो स्टेम का मतलब किसी भी चीज को ओरिजिनेट होना, और स्टेम का मतलब आपका क्या हो जाता है, किसी भी चीज को लिमिट कर देना. राइट. नेक्स्ट. ऑब्स्टेक, सो मेनी वर्ड्स वी हैव. आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बजट, आउटस्टैंडिंग जो भी आपके मॉनेटरी टर्म्स में यूज होता है. तो एक तो आउटस्टैंडिंग होता है ऑसम. टुडे वी हैव आउटस्टैंडिंग वोकैब्स मोर देन लाइक गुड, सो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग. बट आउटस्टैंडिंग हियर इट मींस नॉट येट पेड, इनकम्प्लीट, पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग अमाउंट. Outstanding amount means pending amount, outstanding expenses, right? So yes, pending, incomplete, not yet paid, all these can be the synonyms. So it is an adjective. And if you are outstanding, I want you all to be outstanding. It means I want you all to be excellent. Okay.
Moratorium basically we call to a legal authorization to debtors to postpone payment. मतलब जो कर्जदार होते हैं उनको जो एक लीगल अथॉरिटी मिलती है कि वो अपने कर्ज को थोड़ा देर के लिए पोस्टपोन कर सके, मतलब उनको कर्ज ना देना पड़े, ठीक है. So that is called moratorium. So that is a legal authorization that is given to debtors to postpone payment. Okay, clear everyone? So it is also a noun. Yes. Next word we have is lessors. So lessors, I hope you know, owner, landlord. ठीक है, तो जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, so a person who transfers his property to someone, so that is called lessor. It means owner, landlord. Okay. हाँ, hobble basically we use for stumble also. Correct, Arju. So hobbling basically we use for stumbling also. Okay. Did you get the meaning of that line? Innocent maturity is outstanding for you. So their outstanding means pending. Okay. Next word we have is infirmity. Infirmity basically weakness and fragility. Okay. So infirmity is noun, that is weakness and fragility. Okay. Next word we have is irate. Irate basically we say angry. It is also an adjective. So angry, furious, enraged. So that is the meaning of the word irate. Clear everyone? Got it? Now these many vocabs we have in today's session. अच्छे सारे words हैं. Now when we are going to discuss articles, I want you all to tell the meaning of all the words. Be prepared for this. ठीक है, मैं किसी भी word की meaning पूछूंगी. Now idioms and phrases we have two. One is come to pass. Come to pass basically we say come about, happen or occur. So something that is happening, that is coming about, occurring, that is called come to pass. So it is an idiom, come to pass. It means come about, happen, occur. Okay. Next idiom we have is hold a mirror. So there's a movies, they hold a mirror to our society. So they reflect our society. So hold a mirror means to reflect or to represent. ठीक है, तो reflect करना, किसी भी चीज को represent करना, that is called holding a mirror. Clear everyone? Got it? Got it? So these two idioms we have. Now we have many phrasal verbs. So the first phrasal verb is eat into. So eat into basically we say take away a large part of something valuable. Whether it is money, it is time, eat into we use for eroding. So something that is consuming large part of your time, your money, so that is called eat into. Okay. So that is erode. Got it everyone? Next idiom we have is tighten up. So that's a security tightens up. You know, na? So to become more strict or more careful, that is called tighten up. To become stricter or more careful, ज़्यादा से ज़्यादा strict हो जाना और ज़्यादा careful हो जाना. So that is called tighten up. Whip up. Whip up basically we say deliberately excite or provoke someone. किसी को provoke करना, to instigate someone. You can simply say instigate or incite. तो किसी को भी प्रोवोक करना, एक्साइट करना, इंस्टिगेट करना, so all these are the synonyms of the word whip up. Take away for what you are saying. Incite, yes, instigate, all these are the synonyms. Okay. So many vocab, so many phrasal verbs. Next word we have is rile up again. So rile up also we can say to make agitated or angry. So they both can be the synonyms. So rile up and whip up, they both can be the synonym because here also we say किसी को गुस्सा दिलाना, यहाँ पर भी वही है किसी को भड़काना. तो जब भड़कता है पर्सन तो ऑफकोर्स गुस्से में आ जाता है. ओके, सो दे बोथ ऑलमोस्ट दे कैरी द सेम सेंस. सो डेलिबरेटली पर्पसली किसी को एक्साइट करना, प्रोवोक करना. एंड राइज अप बेसिकली वी सेड टू मेक एजिटेटेड और एंग्री. ठीक है. नेक्स्ट, टैम्प डाउन. टैम्प डाउन बेसिकली वी सेड टू पुट अ चेक ऑन समथिंग. किसी की चीज के ऊपर कंट्रोल कर देना. सो टू रिड्यूस समथिंग, टू लेसन समथिंग, दैट इज कॉल्ड टैम्प डाउन. ओके, टू पुट अ चेक ऑन समथिंग, टू रिड्यूस समथिंग, टू लेसन समथिंग. सो फाइनली वी डिड ऑल द वोकैब्स. ठीक है, सारे वोकैब्स हो गए. चलिए आगे बढ़ते हैं. Shall I proceed? Any confusion in any of the words? आगे बढ़ूं मैं quickly. Commute also we use for listening. Very good, Akshara and Naveen. Yes. So commute also you know कि इसकी दो मीनिंग होती है commute की. तो commute का मतलब travel भी होता है, commute का मतलब reduce या listen भी होता है, किसी भी चीज को कम कर देना. That is also called commute. उसको भी commute कहा जाता है. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं. So guys, as you know, we have multiple courses on Oliveboard platform, banking super elite, SSC super elite, as per your choice. जो भी आपको मतलब जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसका कोर्स परचेज कर सकते हैं.
For purchasing anything on Oliveboard platform, remember to use my code Saba to get additional 5% discount. Join this Telegram channel for updates on every session and for PDF first session के अपडेट के लिए PDF के लिए. अच्छा, कल शाम में मैंने बोला था कि आज एक फ्री LPS होगा SSC के लिए, बट शायद ये LPS उन्होंने पोस्टपोन करते इवन क्रिएट करके भी ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ ऐसी चीजें थी, सो दे हैड टू पोस्टपोन दैट LPS. तो अभी उसका टाइमिंग उन्होंने चेंज कर दिया, ट्यूसडे कर दिया. ठीक है, सो यस, कल 3 स्लाइड्स, कल संडे, कल कोई स्लाइड नहीं होगी, मंडे. ओके, yes we have lot of efforts. हाँ, now it is on Tuesday I guess. Okay, so guys, मैंने कल बोला था, बट एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, आज LPS नहीं है शाम में. ठीक है, कल मैंने बोला था, बट टुडे वी डोंट हैव LPS. कुछ टेक्निकल इशू की वजह से दे हैड टू पोस्टपोन, बट कमिंग वीक आपको हर सब्जेक्ट के काफी LPS मिलेंगे. ओके, चलिए, रीड दिस आर्टिकल गाइस. देखिए, ये आर्टिकल ना बहुत ही अच्छे वे में लिखा गया है. So the way this article has written, read the starting lines, opening lines very carefully. You can use the same lines in your descriptive paper. So read the opening lines carefully. No, no, not on restless protest. We already did one article on restless protest. So Nani, I will tell you. Yes, yes, like practice session, DPS. Right? Ethnic quagmire. So it means actually there is a very difficult situation. Quagmire here we use for difficult situation, dangerous situation. So this article is basically on Manipur violence. So of course, whenever we have a violence, that is a very difficult situation. Okay, वो बहुत ज़्यादा difficult situation होती है. And this violence is related to race. Ethnic basically we call to races. Okay, ये जाति को लेकर के है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा रूल पास किया हुआ है जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया हुआ है. तो it is basically that, related to that. Okay. Violence in Manipur could have been avoided. ये बिल्कुल अवॉइड हो सकता था had the government stayed above the fray. Now above the fray basically we say not directly involved. ठीक है, अगर गवर्नमेंट इस तरह के बैटल में इन्वॉल्व ना होता डायरेक्टली, ठीक है, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट द कंप्लीट वायलेंस हैज अकर्ड. ओके, हैड द गवर्नमेंट स्टेड अबव द फ्रे, दिस वायलेंस कुड हैव बीन अवॉइडेड. इसको अवॉइड किया जा सकता था. ठीक है, सो नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ बैटल और कॉन्फ्लिक्ट. गॉट इट एवरीवन? अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती तो ये वायलेंस बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड किया जा सकता था. सो दैट इज द सेंटेंस. could have been avoided. This is inversion. Had का subject ये है. Had the government stayed above the fray. Okay, so government is the subject. Had का inversion form is used. Yes, the concept of unity in diversity. The concept of unity in diversity is not an abstract one. ये कोई abstract concept नहीं है. It is a concrete one. We have to follow because in India that is a secular nation. If we do not follow this concept of unity in diversity, then definitely there will be so many communal violences. Okay. In a multi-ethnic nation means India is a nation where we have so many races, so many religions, so many castes, so many creed. Okay, so that is why it is a multi-ethnic national or provincial setting. तो किसी भी प्रोविंस में, किसी भी नेशन में जहां पे बहुत सारे रेसेस रहते हैं, द अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस इज अ वे. So definitely we have to accommodate all the differences. We should know how to live with the differences. जैसे शादी होती है तो two people they are from different families. Still they learn to accommodate with differences. दोनों के अलग अलग choices होते हैं, दोनों के अलग अलग की customs होते हैं, बहुत सारी चीजें differ करती हैं. But still they learn to accommodate. अगर वो accommodate नहीं करेंगे तो definitely that will not be a successful marriage. So the same thing, the accommodation of differences in a way that bestows means confers, grants सोशियो कल्चरल रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटीज. मतलब जितने भी आइडेंटिटीज है, जितने भी रेसेस है, जितने भी सिविलाइजेशन है, सबको इक्वल आइडेंटिटी मिलनी चाहिए. व्हाइल स्ट्राइविंग फॉर when we are struggling for constitutional unity and equality through governance is a must for progress.
So this complete line is very important. The same line you might use whenever it comes to whenever such an article comes in your examination. Okay. In a multi-ethnic national or provincial setting. So noun is setting here. So national or provincial they are used as adjectives. Got it दिव्या? तो मतलब कोई भी ऐसा setting जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं. So this setting is noun, national and provincial. They are adjectives. Okay. I hope you have understood. The only meaning of the first line is that when we talk about such a nation where so many races are there, so each and every tribe, each and every caste, each and every community, they should get equal identity. Then only it will be possible to achieve that constitutional unity. तभी हम लोग constitutional unity achieve कर सकते हैं. Okay. The conditions for a conflict arise. Conflict कब होता है? When identity is tightened up. अब जो भी सिमिलैरिटीज है जो भी हमें देखिए एवरी पर्सन हैज हिज आइडेंटिटी. हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है दैट वी आर इंडियन. देन सेकंड आइडेंटिटी इज अवर रिलीजन. देन स्टेट आप कह सकते हो, रिलीजन कह सकते हो. थर्ड आइडेंटिटी इज योर कास्ट. सो एवरी दीज ऑल आर योर आइडेंटिटीज. व्हेन योर पर्सनल आइडेंटिटीज दे टाइटन अप, जब वो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो जाती हैं एंड बिकम एक्सक्लूसिविस्ट. ओके. तो जो भी आइडेंटिटीज हैं दे बिकम स्ट्रिक्ट और आपको लगता है कि दे हैव बीन एक्सक्लूडेड, आपकी जो पर्टिकुलर कास्ट है वो एक्सक्लूड की जा रही है. सो इट लीड्स टू ग्रीवांसेस. उसमें फिर ग्रीवांसेस होते हैं. ओवर परसीव्ड नेग्लेक्ट ऑफ वन ग्रुप बिकॉज नाउ दैट पर्टिकुलर ग्रुप दे फील दैट दे आर बीइंग नेग्लेक्टेड, दे आर बीइंग ओमिटेड. सो व्हेन दैट एक्सक्लूजन फीलिंग्स कम, जैसे आपको लगेगा कि आपके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, आपको लोगों ने अलग कर दिया. सो व्हेन यू गेट दैट फीलिंग तो डेफिनेटली देयर विल बी अ केस for this conflict. Okay. But good governance that focuses on accommodation and dialogue helps stem the possibilities. Stem means avoid the possibilities of a deterioration of such conditions into violence. But when we have a good governance, अगर governance अच्छी होती है and a governance that focus on accommodation, that it is ready to accommodate all people, people of all the races, okay, and they are ready to dialogue means converse, वो बातचीत करने पे ready होते हैं. So of course such a governance can definitely avoid the possibilities of deterioration of conditions into violence. कि तो कोई भी condition जो है, कोई भी situation violence में turn नहीं होगी, because government plays very important role. Okay. The spurt of violence, spurt means increase, sudden increase of violence in Manipur that led to mass displacement, जिसमें काफी लोग displace हो गए. The loss of lives, vandalization of houses, churches, temples, besides arson across 5 districts. मतलब बहुत ज्यादा violence हुआ है जहां पर लोगों ने चीजों को तोड़ फोड़ की है, आग लगा दिया है. Many people have lost their life, mass displacement. So this complete violence might have been a consequence of a long-standing hill-valley identity divide in the state, but it was also avoidable. मतलब ये काफी दिनों से चल रहा था. There was a fight related to identity. Okay, so because of that, it is a consequence. It is the result. This violence is the result of long-standing hill-valley identity. So it was pending from a long time, and now immediately it burst into a violence. Okay, but this situation was also avoidable. ये situation बिल्कुल avoid हो सकती थी अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इन्वॉल्व ना होती चीजों में. ओके. नाउ द ट्रिगर वॉज अ रैली. अब ये ट्रिगर क्यों हुआ? वॉज अ रैली कॉल्ड बाय ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन. ठीक है, इन्होंने एक रैली बुलाई मणिपुर. ठीक है. On Wednesday, they called a rally on Wednesday, protesting the move to acknowledge a demand, to agree to a demand, to acknowledge, okay, to acknowledge a demand for ST status. ठीक है, कोई state status की बात हो रही थी, उस डिमांड पे अग्री कर गया था. ठीक है. फॉलोइंग द हाईकोर्ट ऑर्डर, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था टू द मीटिस द मेजोरिटी ग्रुप. तो माइट बी दिस इज द ट्राइब. ठीक है, इसको एक्नॉलेज करने पर ही ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ है. ठीक है, वॉयलेंस हुआ है. राइट. The tribal groups are opposed to this demand. So the entire tribal group, they were opposed to this demand, and this demand was not uniformly supported by all sections of the Metis. तो ये जो Metis people थे उनके सारे मतलब सबने सपोर्ट भी नहीं किया था. So many people that didn't support this, इस वजह से वो हुआ था. ठीक है. While the grievance that according ST status would eat into the reservation pie here means share.
for the hill travel community seems to be somewhat valid. Now, what was the grievance? Why they were not supporting this? ये support क्यों नहीं कर रहे थे डिमांड को? Because as per that, उनका ये कहना था कि ये जो ST status है, it would definitely eat into means it will take away a large portion of reservation. तो जो भी reservation tribal को मिलता था, वो reservation खत्म हो जाएगा for the hill tribal communities. And this reason seems to be somewhat valid. ये थोड़ा सा valid reason दिखता है, okay? Their raising concern that this will compromise traditional land ownership is not entirely born out of reason and has been used by tribal leaders to whip up hysteric anti-valley sentiments. लेकिन देखिए ये एक थोड़ा सा उनका था कि इनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, बट जो इनके अंदर ज्यादा गुस्सा था, मतलब मैक्सिमम देवर enraged. So the raging concern that this will compromise traditional land ownership, कि जो अभी लैंड ओनरशिप है उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एंड दिस इज नॉट आउट ऑफ रीजन, ये इलॉजिकल नहीं है. इनका ये जो जस्टिफिकेशन था दैट इट विल कॉम्प्रोमाइज विद द ट्रेडिशनल लैंड ओनरशिप, दैट वाज नॉट इलॉजिकल, ओके. एंड हैज बीन यूज्ड बाय, और ये जो था ये मतलब ट्रेडिशनल लैंड ओनरशिप जो भी कंसर्न था उनका, दैट हैज बीन यूज्ड बाय ट्राइबल लीडर्स टू whip up means whip up means control. Hysteric means very wild anti-violent sentiments. इस तरह के उन्होंने उसको कंट्रोल करने के लिए यूज भी किया था. ओके. द conflagration means फायर, ये बेसिकली वायलेंस को यहाँ पे रेफर कर रहा है. was also the कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीविंग डिसकंटेंट. तो ये जो ऐसा नहीं, देखिए कोई भी वॉयलेंस एकदम से अचानक नहीं हो जाता है, ये वॉयलेंस धीरे धीरे स्टेट ऑफ प्रोग्रेस में होता है, और फिर कोई ऐसी चीजें होती है कि सारी चीजें बिल्कुल से एकदम बाहर आ जाती हैं. पीपल दे आर अनेबल टू टॉलरेट दैट, ओके. So the conflagration, that violence was also the consequence of breeding discontent. There was discontent that was slowly getting into the people's mind, okay, against what tribal groups perceived as the state government's bad action. Now, tribal people, they thought that, उनको ऐसा लग रहा था कि state government's actions are bad. स्टेट गवर्नमेंट इज बीइंग पार्शियल, वो पार्शियल हो रही है, तो उनके अंदर पहले से ही डिससेटिस्फैक्शन था, एंड ऑटोमेटिकली विद दिस इट केम, ठीक है, फिर वो वायलेंस का फॉर्म ले लिया. गॉट. If the state's Bharatiya Janata Party led government has acted with alacrity, अगर वो थोड़ा सा enthusiasm के साथ, swiftness के साथ काम करती, and removed the perception, अगर लोगों के माइंड से ये perception दूर कर देती, that it was biased towards one dominant section, जैसे people को क्या लग रहा था कि ये एक section की तरफ biased है, only one particular section is going to get benefit of this metis जो भी रूल फॉलो हो रहा था. अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा भी एक्शन लिया होता एंड गवर्नमेंट हैड क्लैरिफाइड एवरीथिंग कि देयर इज नो परसेप्शन, सो दिस सिचुएशन कुड हैव बीन अवॉइडेड, ये वायलेंस अवॉइड हो सकता था. दिस सिचुएशन वुड नॉट हैव कम टू पास मींस ये जो वायलेंस है इट वुड नॉट हैव occurred, ओके. इन इट्स ओवर zealousness, ठीक है, बहुत ज्यादा zealousness में, इन अ वॉर अगेंस्ट ड्रग, what the government did, why the editor said that government was involved, because government in its over zealousness, that is extra overconfidence, over activeness, it started a war against drugs. The government had indulged in eviction drive, और फिर वो eviction drive में लग गई, ठीक है, which included one that had affected a Kuki village in March, और ये वही केस है जो मार्च में कुकी विलेज को हुआ था, and had prompted some of BJP's tribal MLAs to raise this issue of perceived bias. Even BJP's MLAs, जो tribal MLAs थे, they were forced to say कि नहीं there is biasness, okay, उन्होंने भी अपना concern raise किया कि there is a biasness, ठीक है, and seek a change in party's state leadership. Now imagine the situation कि BJP के MLA उन्होंने बोला कि नहीं there is a partiality, there is a biasness, and they asked for a change in state party's leadership, कि वहां पे पार्टी के लीडरशिप में चेंज हो, ओके. Now, evictions ostensibly means outwardly, डन फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, मतलब ऊपर से दिखाने के लिए किया जा रहा था कि एविक्शन जो किया जा रहा है वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा है, एंड इन द नेम ऑफ रिमूविंग आउटसाइडर्स को हटाने के लिए किया जा रहा है, tend to cause passions to rile up among people dependent upon the hills for a livelihood. Now what it did, eviction, it of course it instigated people dependent upon the hill. तो जो भी लोग वहां पे फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते थे, जो ट्राइबल पीपल, of course they were instigated, वो भड़क गए, okay.
डूइंग सो विदाउट रिपोर्ट्स, व्हाई? क्योंकि आपने उनको कोई सॉल्यूशन तो दिया नहीं। नो दोज ट्राइबल पीपल दोज हु आर डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इनको अगर आप हटा रहे हैं तो ऑफकोर्स यू शुड हैव सम ऑल्टरनेटिव ना, कि ये लोग जाएंगे कहाँ। सो देयर वाज नो प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर सेटलमेंट एंड कंपनसेशन, और कोई कंपनसेशन भी उनको नहीं मिला। तो दिस इज कंप्लीटली इनह्यूमेन। सो दिस ओनली हाइटेंस अ सेंस ऑफ इनजस्टिस अमंग दोज अफेक्टेड। तो उनके अंदर लग गया कि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, दे हैव बीन neglected by the government, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। ओके, विद द यूनियन गवर्नमेंट टेकिंग चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, अब क्या हो रहा है, यूनियन गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ा, बिकॉज बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट है, तो ऑफकोर्स यूनियन गवर्नमेंट इज नाउ interfering there. Now it has taken the charge of security and tamping down means reducing the violence, controlling the violence should follow, वो आएगा, but the grievances to melt down, लेकिन अब लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो कंप्लेंट है, उसको कम करने के लिए द faltering स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कन्वेन एन ऑल पार्टी मैकेनिज्म, उनको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी सो दैट दे कैन डिस्कस एन ऑल पार्टी मैकेनिज्म टू रीच आउट टू द पीपल अक्रॉस ethnic divides, so that they can talk to the people who have been you can say who have been affected, who are grieved. Okay, so basically उन तक उनको पहुंचना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ू मैं, क्विकली फाइंड द एरर, जल्दी से एरर बताइए। Second article is also good, so quickly we have to do that also. Find the error. Yes. So it is third condition. I hope you all know. Very good. Third condition. So conditional sentence, the third condition. Had acted, had plus V3 here. So you know in principal clause we need would have plus V3. So the error is in last part, would have not come to pass. So the correction will be would not have come to pass. Okay. Yes. So we need future perfect tense. So it will be would not have come to pass. Clear everyone? I hope no confusion at all. So third condition, had plus V3 would have plus V3. So this is how you have to remember all the conditions. Okay. कभी कभी तो ये लोग सही use करते हैं. Okay. So we have to follow. Clear everyone? So error lies in D part. So D part is wrong. This would not come will be replaced with would not have come. ठीक है? चलिए next article. What is the tone of article? First of all tell me. Tone is very obvious. I hope सबको tone समझ में आ गया होगा. पहला tone किसका है? Concern का है. पूरा situation that is of concern. Yes, critical. And at last we have suggestion. So at last we have suggestion. Critical, concern and suggestion. Right. Critical, concern and suggestions. Okay. Next article. Quickly we have moved on to the next article. चलिए मैं समझा दूं. I'm giving you 1 minute to read it. एक बार थोड़ा सा idea ले लीजिए. Then I will discuss. It is not analytical thing. It is completely, of course, it can be derivative. There can be three tones. It actually varies according to the passage. So if you talk about dominating tone, so it is concern and critical. So first is concern, second paragraph is critical. So of course that can be. And we have to check the options, whichever is mentioned, we have to mark accordingly. No. Symptomatic stall. Symptomatic means indicating. Indicating. Stall, you know, that is prevention. Prevention, okay? On the go first crisis and the aviation industry. तो ये जो go air की जो crisis हुई है and there is aviation industry. So basically it is, this article is on that, okay? The aviation industry needs policy changes and regulatory overhaul. वहां पे पूरी तरह से overhauling चाहिए aviation industry में, and they need policy changes also because otherwise सारे ही bankrupt हो जाएंगे, right? Go Airlines, I hope सबने नाम सुना होगा. Now they have changed their name into Go First. पहले वो Go Airlines थी, अब उन्होंने Go First कर दिया है.
द वाडिया ग्रुप्स लो कॉस्ट कैरियर, ये वाडिया ग्रुप की एयरलाइन है. This week became India's first domestic airline since the outbreak of COVID-19 pandemic to go into a mid-air stall and seek bankruptcy protection. So after pandemic, it is the first domestic plane airline जो कि आपका आफ्टर पैंडेमिक जो एक तरह से बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन में चला गया है. नाउ दे आर सीकिंग बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन for an airline that rebranded itself as Go First less than 2 years ago. Okay, so earlier the name of this was Go Air. Now 2 years before only they have changed their name into Go First. Okay, in a bid to means in an attempt to. Okay, in an attempt to make a fresh start because they wanted to start it fresh. So that is why from Go Airlines they have changed the name, they have rebranded the name as Go First. Okay. With CEO Kaushik Khona, he was the CEO, declaring at the time, our consumers come first and our confidence in the brighter tomorrow. So this was the tagline when they rebranded the name Go First. Clear everyone? तो जब उन्होंने ब्रांड का रीनेम किया हुआ था, so their tagline was our consumers come first and our confidence in the brighter tomorrow. Okay. The carriers, the flights, abrupt announcement of a suspension of operations is rich in irony. अब उन्होंने जो एकदम अब्रप्टली 2 साल पहले उन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया है, टैगलाइन रखा है. नाउ इमीडिएटली दे आर saying that they are unable to operate, they have suspended their operation. So this complete announcement is rich in irony. उसमें बहुत ज्यादा irony है. Why it has laid the blame? अब एयरलाइन ने पूरा ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया? स्क्वायरली मीन्स डायरेक्टली, स्ट्रेट फॉरवर्ड. उन्होंने पूरा ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया है? द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फेलिंग इंजन, कि उनके इंजन जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब इतना कभी नहीं फेल हुए थे जितना इस बार हुए हैं. सप्लाइड बाय प्रैट एंड विटनी, इट मींस दे हैव पुट देयर ब्लेम ऑन दिस कंपनी दैट हैज सप्लाइड इंजन टू देम, जिसने उनको इंजन सप्लाई किया था. ओके, so which it claimed had resulted in half its Airbus fleet being grounded. Being grounded means unable to be operated. तो यहाँ पर क्या हुआ? Because engine failure की वजह से उनके maximum airlines they are grounded, they are unable to operate. Right? The engine problems could at best be termed the proximate cause. Engine की problem एक approximate cause हो सकता है. It can be a possible reason. Go first financial woes. Woes means trouble, suffering, sorrow. ओके, प्रीडेट ये उससे पहले से है, बिफोर इंजन प्रॉब्लम ऑल्सो. सो इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द इंजन प्रॉब्लम दे हैव सिंपली अनाउंस बैंक्रप्सी स्टेट. तो ये आपका पहले से ही चल रहा है. इनका जो ट्रबल, इनका जो प्रॉब्लम है, इट predate the fleet troubles and the pandemic and are largely symptomatic of the malaise afflicting the wider industry. ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंजन कॉज की वजह से हुआ है. सो देर आर सो मेनी थिंग्स, फ्लीट ट्रबल्स, ठीक है, पैंडेमिक the most obvious reason, and the largely symptomatic of the malaise. What do you mean by the word malaise here? Quickly tell me. Afflicting the wider industry. तो ये पूरी इंडस्ट्री पे एक तरह का, ओहो, पहले टोन वी विल डिस्कस लेटर माय डियर. टोन का एक सेगमेंट आता है ना, तो वी कैन डिस्कस द टोन दैट टाइम. लेट अस कंसंट्रेट ऑन द आर्टिकल. पहले आर्टिकल तो समझ लीजिए. अच्छा, हाउ कैन यू जस्ट बाय रीडिंग वन पैराग्राफ, दैट टू हाफ ऑफ द पैराग्राफ, इट इज नॉट इवन कंप्लीट वन पैराग्राफ, तो हाउ कैन यू डिसाइड द टोन? टेल मी, कैसे आप टोन डिसाइड कर सकते हैं? Malaise basically we call 2 years, unpleasant, not satisfaction. Okay, so that is called malaise. Unhappiness, yes, dissatisfaction. So there is so much dissatisfaction that is afflicting the wider industry. So the complete air industry, aviation industry is dissatisfied. So all these are the reasons that are occurring even before the failure of engine. Clear everyone? Given the high capital and operational cost, because aviation industry को run करने में there is so much money involved. Okay, बहुत ज्यादा operational cost होता है. The commercial air transport industry operates with wafer thin margins. Wafer thin margins, you know, very less margin पे operate करते हैं. और जिस भी सेगमेंट पे, जिस भी बिजनेस में मार्जिन ज्यादा नहीं होगा, सो दैट इज वेरी वल्नरेबल टू बैंक्रप्सी. वो बैंक्रप्सी के बहुत नजदीक होती है. सो दैट इज व्हाई दिस कंप्लीट एविएशन इंडस्ट्री दे रन ऑन वेरी लेस मार्जिन. दैट इज व्हाई दे आर मोर ससेप्टेबल टू बैंक्रप्सी. क्लियर एवरीवन? Added to this, apart from this, the swelling competitive intensity. Swelling means increasing.
There is so much competition also. Intensity in India's budget airline sector. तो जितने भी बजट एयरलाइन सेक्टर हो गया, जैसे गो एयर हो गया, इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, सो दे आर बजट एयरलाइन सेक्टर. तो इसमें आप देखेंगे देर इज सो मच कॉम्पिटिशन. A decade and a half years ago, मतलब 10-15 years में there is so much competition among all these airlines. Saw rivals adopt aggressive pricing strategies to gain market share. So all the rivals, okay, now they are using very aggressive strategies. तो अब अगर आप competition में price low कर रहे हैं, तो of course आपके पास जो थोड़ा बहुत margin है वो भी कम हो जाएगा. So that is why these are the reasons why aviation industry is falling. This topic is very very important, my dear, for your descriptive paper. Okay, descriptive paper के लिए बहुत important है. To gain market share that stressed balance sheets and made companies more vulnerable to shocks. Got the idea, guys? कि यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब because of this intense competition, all these things are tightening the balance sheet. Okay, तो उनके पास profit बच ही नहीं रहा, and that is why many companies are vulnerable to shocks, bankruptcy. If the lockdowns announced in India in March 2020 and the tight travel curbs to combat the spread of SARS-CoV-2 virus dealt a deeply bruising blow. Bruising basically we say injuring blow to all contact intensive sectors. So whether it was aviation, whether it was hotel industry, so all those industries that were adversely affected because of the lockdown. ये जो lockdown से सबसे ज्यादा affected क्या हुआ था? Hospitality, that is hotels, aviation industry, they were the worst affected, right? Last year surge in crude prices in the wake of means as the consequence of, as the result of so many idioms we have. ठीक है, यूक्रेन इन्वेजन combined with the rupees depreciation against the dollar sent aviation turbine fuel, that is ATF cost soaring for domestic carriers. Now these are the possible reasons that COVID की वजह से लॉकडाउन लग गया, तो सारे इंडस्ट्रीज मतलब ये जो हॉस्पिटैलिटी थी, एविएशन थे, बिल्कुल बंद हो गई. अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे ही कोविएशन हटा, सो वी गॉट सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, जैसे ही कोविड वाला केस हटा, ठीक है, लॉकडाउन अपलिफ्ट हुआ. सो आफ्टर दैट वी गॉट यूक्रेन इन्वेजन. सो बिकॉज ऑफ यूक्रेन इन्वेजन क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई. ठीक है, दिस आर द पॉसिबल रीजंस. एंड द डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी जो है पूरी तरह से डिप्रिशिएट हो गई. सो ऑल दीज लेड टू द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एटीएफ दैट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल. इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया. स्काई रॉकेटिंग कॉस्ट वी गॉट टू सी. ओके, सो दैट इज व्हाई इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ऑपरेट. उनके लिए ऑपरेट होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, राइट? एंड व्हेन एयर ट्रैवल डिमांड रीबाउंडेड लास्ट ईयर, फिर से जब डिमांड रिबाउंड हुआ, एज द पैंडेमिक लिंक्ड रेस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड, जैसे रेस्ट्रिक्शंस खत्म हुए, डिमांड बढ़ा. गो फर्स्ट फाउंड इटसेल्फ ऑलरेडी हॉबल्ड विद ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ इट्स फ्लीट हैविंग बीन ग्राउंडेड बाय दिसंबर 2020, ऑस्टेंसिबली ड्यू टू इंजन इश्यूज. और जैसे ही एक बार सारे लॉकडाउन वगैरह सब कुछ, सारे कर्ब्स जो थे वो एक तरह से लिफ्ट हुए, तो अब जो ये एयर ट्रैवल डिमांड था वो जो है पूरी तरह से क्या हो गया, मतलब गो एयर ने, उनको क्या लगा कि उनके पूरे इंजन्स जो है दे हैव बीन ग्राउंडेड, सो दे वर अनेबल टू ऑपरेट. तो उनके लिए अब ये भी ऑप्शन नहीं बचा कि वो एक बार आफ्टर पैंडेमिक वो अपने फ्लाइट्स को ऑपरेट कर सके, सो दैट दे कैन मेकअप. ओके, सो ऑल दीज आर द केसेस. Now, with the airline now moving the National Company Law Tribunal for initiation of insolvency proceedings, now it is going to declare itself insolvent, bankrupt, okay, and an accompanying moratorium. Now it wants moratorium, मतलब थोड़ा सा उनके डेप्ट वगैरह जो है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए. On outstanding credit, because they have so much balance credit, aircraft lessors means owners, have opposed the carrier's resolution plea and instead sought aircraft deregistration and repossession. लेकिन अब उनके जो ओनर है, दे वांट कि पूरी तरह से एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाए और ये कोई और ले ले, इसकी ओनरशिप किसी और को चली जाए. सो दे वांट टू ट्रांसफर द ओनरशिप. ओके, सो देर आर सो मेनी रीजंस. इतनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इतने सारे आपको रीजंस मिल रहे हैं फॉर द फेलिंग एविएशन इंडस्ट्री. सो दिस आर्टिकल कैन हेल्प यू अ लॉट whenever you get an article on failing in aviation industry or the impact of aviation industry on economy. So all these points can be used. The outcome in the NCLT notwithstanding, despite the developments hold a mirror to the industry's systematic infirmities. Even though they are waiting for the result, okay, but the development, it shows, it reflects that how much weak this aviation industry is. आपको लगता है उनके पास प्लेन है, but this industry is, चलिए
So complete, we were at the last of the article. So the responsibility is on the center. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से सेंटर की है, दैट दे हैव टू फाइंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी सॉल्यूशंस, उनको पॉलिसी सॉल्यूशंस लेके आना होगा. इफ गवर्नमेंट रियली वांट्स इंडिया स्ट्रगलिंग एयरलाइंस टू रीच क्रूजिंग एल्टीट्यूड, मतलब अगर वो जाती है कि एविएशन हाइट पे जाए, द कंप्लीट एविएशन इंडस्ट्री इफ इट वांट्स कि वो सोर करे, सो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल हैव टू कम अप विथ लॉन्ग पॉलिसी सॉल्यूशंस. क्लियर एवरीवन? Now find the tone of the article quickly. Let me come back on screen. Find the tone of the article. जल्दी से tone बता दीजिए. Hurry up. What happened, Priyanka? क्या हो गया? No, tone is not ironical. Tone is not ironical. Yes, it is basically analytical, because complete analysis has been done that what are the reasons behind falling industry. Okay, so the complete analysis has been done, so it is basically analytical. Yes, it is concern also, it is a tone of concern. Okay, and suggestion, a bit suggestion. So analytical, concern, and a bit suggestion. Where did you find it critical? Government has not criticized anything. Government has not criticized anything. It is telling all the possible causes. Okay. So what are the reasons behind this failing industry? So the complete has been discussed. That is analytical. It is concern and a bit suggestion also. Okay. Yes. Positive, nothing mentioned, but the analysis, matlab you can say कि complete data has been given, pros and cons. See, analytical, as I always say, pros and cons, all the aspects. Okay, so that has been dealt. Is it critical? Government is criticizing it. Is it critical? Analysis, matlab, yes, you can say even analytical, you can say technical, you can say. ठीक है? The theme of the company, he has criticized it. Not criticized, Arju. Matlab they have only told, matlab the editor has only told that first it was Go Air. Now with the last 2 years back only they have rebranded the name of their company. उन्होंने अपनी company का name rebrand किया था. They called our consumers come first and confidence, all these things means they started with a hope. उन्होंने पूरी hope के साथ start किया था. But within 2 years of rebranding only they failed. दो महीने के अंदर ही वो पूरी तरह से collapse कर गए. So that is what the government has been criticized, maybe. Yes, today we have. irony, basically we say ki operations is rich in irony. Okay, so that is. So later they have discussed all these things. So author is not see, the first article was criticism, but here the complete second paragraph, if you see the complete reason that what all the aviation industries are going through, so the complete reason has been discussed. Okay, so it is more towards concern. ये ज़्यादा concern है, analytical and a bit suggestion. Okay. Yes, we do have 9 AM session. Guys, हमारे पास आज बहुत सारे idioms and phrases थे. But again, I don't want you all to put in 30 minutes, 40 minutes into homework only because we have so many things. So just do three phrases. क्योंकि जो repeated phrases हैं उनको करने की जरूरत नहीं है. Just use these 3 phrases in a sentence of your own so that you can remember. जैसे whip up हो गया, roil up हो गया, come to pass हो गया. These are three new ones. So please do that. Okay. So there will be 9 AM session. 9 AM sharp means 1 minute, 2 minutes buffer I give you. So we have a vocab session at 9 AM. So do join that. Okay. 9 AM we have a vocab session. So do join it, guys. So thank you, everyone. Use this code Saba. Join this Telegram channel for updates and for PDF. Okay. So thank you, guys. Please do hit the like button, subscribe to our YT channel and share this session with others. सबके साथ session share कर दीजिए. Thank you. We'll meet at 9.